photographer Umair Bin Nisar, and you are watching me on Style 360. आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगा. I'll tell you something about my work. So hopefully you will enjoy it. Stay tuned. आई बिलीव कि हर बंदे का लाइफ में एक एम, एक गोल होना चाहिए. एवरीबडी शुड नो कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है. और आई थिंक एम और गोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अदरवाइज यू विल वेस्ट योर लाइफ, यू विल वेस्ट ऑल द टाइम you've got. और आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. आई न्यू दैट आई वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर, और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. I studied photography and then I started working with photographers. That's how I learned photography. I always had interest in photography since my brother used to do photography. He's my elder brother. So I always loved taking his camera and going out and shoot people. So I always had that interest in photography, which actually developed when I decided to do a course in photography. I did a diploma in photography from Allianz. Then I decided to work with fashion photographers. I worked with Ayaz for a year, and he has taught me a lot. I believe he's one of the best fashion photographers in Pakistan. He's technically very good. His work is simply awesome, and I wish I can be someday like him. The kind of work he produces, I believe it's just completely awesome. Photography करने में मज़ा बहुत आता है. उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा से एक चीज़ सोची थी कि मैं ऑफिस कभी नहीं जा सकता, बिकॉज आई कैन नॉट डू दैट 9 to 5 जॉब थिंग. मुझे पता था मैं बोर हो जाऊँगा, जिसके लिए आई एक्चुअली हैड टू टेक समथिंग जिसके अंदर मुझे नए लोगों से मिलना हो, नई चीज़ करनी हो हर दफ़ा जब भी मैं अपने काम पे जाऊँ. तो फोटोग्राफी में आई गेट दैट चार्म. आई गेट टू मीट न्यू पीपल. आई वर्क विद डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट डिज़ाइनर्स. सो विच इज़ द बेस्ट पार्ट. आप कभी बोर नहीं होते. आपको हमेशा नए लोग मिलते हैं काम करने के लिए, और एक बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अ थिंग हो जाती है कि आपकी दोस्ती हो जाती है, द पीपल यू वर्क विद, और यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज पीपल. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फोटोग्राफी. आई डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोटोग्राफी. मैं वेडिंग्स भी करता हूँ, मैं फैशन भी करता हूँ, आई कवर डॉक्यूमेंट्रीज, हर किस्म की फोटोग्राफी. बट मेनली आई लव डूइंग फैशन बिकॉज दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. मेरे अंदर एक फैशन की फील्ड है, सो आई एंजॉय डूइंग इट. Weddings, I cover a lot of weddings. I do bridal portraits as well, or मेरे portraits I like doing some simple and not very posy kind of pictures, posy kind of bridal portraits. मेरा personally favorite fashion photographer is Giuliano Decor. I simply love his work. Or there's another photographer, his name is Rui Bhalla. He is into street photography, and I think there isn't any other photographer better than him. The black and whites he does, they're simply marvelous. They are like mind-blowing pictures, and I would love to do something like that as well. Whenever I'm free, I'm in my house. I love spending time with my mother. We go out for dinners, and I've got sisters as well who come up to my house, and हम लोग साथ खाने पे जाते हैं. और this is what I normally do when I'm not working. I like spending time in my house. I love sleeping. Whenever I'm home, I'm not working, I don't have anything else to do, I sleep or I surf on internet. That's what I basically do in my spare time, and I actually enjoy doing it. I think that's me. I don't really like going out with friends and sitting in cafes and stuff. I'm not a very outgoing person. I do like traveling, but when if I'm going for any shoot or something, I prefer that. I don't like picnics kind of stuff. So yeah, I'm a pretty boring person, I know that.
And besides that, I love food. I love tasting different kind of foods and drinks. So whenever I see any new restaurant or any new cuisine or something, I love to try it. I don't make friends very easily because I believe there should be very limited friends in your life जिनके साथ आप सब कुछ share कर सकते हो, whatever your problems and stuff. So I have very limited friends with whom I normally go out or whatever it is. I love long drives. जब मैं normally जब मैं shoot से वापस आ रहा हूँ तो I drive alone. So I like that part because I am always happy when I'm coming after when I'm done with my shoot and driving back home. I'm always very happy about it. So I like that little part of going and driving back home with a happy face and a smile on my face that I've done something good and I've done something जो कि मैं actually हमेशा से करना चाहता था. आज हम लोग मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज मैं आपको कुछ अपनी फोटोग्राफी इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा. This is the camera 7D Canon which I use for all my shoots. और the features it has, it really got some nice video option in it, which normally not all DSLR cameras got. So the reason I bought this camera was I make some music videos as well. So nowadays a lot of music videos are being made on 7Ds. और ये जो lens है, it's a low light lens or it's a Canon L series. The best quality lenses of Canon are called L series. So it's very good when it comes to low light thing. Or it mainly helps me with when I'm shooting weddings and when I'm shooting any music video. बहुत ज़्यादा फैशन फोटोग्राफर्स Canon यूज़ करते हैं. उसका मेनली पर्पज़ ये होता है बिकॉज Canon इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली और Canon के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं. बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ Canon. 7D की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी है. इट रिकॉर्ड्स HD क्वालिटी वीडियो. दैट्स द best part in this camera. The lens I'm using right now, it's best for weddings and it's best for fashion as well. And that's the most used lens everywhere in the world. Besides that, you can use different kind of lenses. It depends on the focal length you want and what kind of shoot you're doing. So it mainly depends on that. Otherwise. आजकल तो हर साल इनफैक्ट हर 6 महीने बाद नाइकॉन और कैनन नए कैमरे लॉन्च करा है. एंड आई थिंक बीइंग अ फोटोग्राफर you always need to upgrade your equipment in order to produce better work, better quality. This is my lighting equipment and the backdrop stuff. मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या लाइट्स मैं यूज़ करता हूँ. Well, this is Rime light. It's a strobe. The best thing about strobes is कि आप continuous mode पे भी shoot कर सकते हैं and you can actually get a very good intensity range in this light. आप intensity कम ज़्यादा कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा points होते हैं इसमें. Besides that, you have this halogen bulb on which you can actually shoot videos, or you can actually shoot if you want that continuous light effect in your pictures, you can actually get that from this light. Besides this is a small soft box. It's not a strobe actually. It's just a light, just to fill in the shadows and stuff in my light. So that's why I use this small soft box. There's another big guy out here. It's a big soft box. It's a 600 watts light. You cannot shoot continuous on these lights because these are बहुत सस्ती lights होती हैं, इतनी महंगी नहीं पड़ती. और you can actually get very good quality in your pictures if you're shooting portraits or if you're shooting even a fashion shoot. Well, softbox we normally use to soften the light. Here is this grand softbox. Well, it is very useful when you are doing outdoor shoots because आप के पास sunlight बहुत harsh आ रही होती है, so you need something really big to shoot against the sunlight. तो उसके लिए I use for my outdoor shoots I use this Rime lights
ग्रैंड सॉफ्ट बॉक्स। इन लाइट्स के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये बैकड्रॉप है। ये एक्चुअली पेपर बैकड्रॉप है which gives you a very good quality in your pictures when you are shooting indoors. It's very, we cannot really take it outside and we can shoot it. We can, but still it's a very sensitive backdrop, तो obviously आप नहीं चाहोगे कि आपका फजूल में नुकसान हो। आप ये जो ऊपर चीज़ देख रहे हैं, it's a grid actually, और ये एक्चुअली लगवाई गई है ताकि हमें अगर टॉप लाइट देनी हो या अगर जैसे if you don't want to use boom stand, so you can actually hang the light on this stand and you can move it anywhere you want, so which is pretty easy actually, and it's safe and it's very, आपको लाइट पकड़ के खड़ा नहीं होना पड़ता, so उसके लिए ये grid बहुत यूज़फुल है and I simply love it। आपको बहुत easy हो जाता है आपके लिए काम करना। यहाँ पे कुछ और किस्म के बैकड्रॉप्स भी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कैनवस का बैकड्रॉप है ग्रे कलर का। एक्चुअली आप डिपेंड्स कि आप कौन से किस किस्म का इफेक्ट देना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर्स में। दीज पेपर बैकड्रॉप्स आर गुड फॉर सर्टेन शूट्स एंड दीज कैनवस मेड अप ऑफ बैकड्रॉप्स आर फॉर सम, डिपेंड ऑन द मूड, आपको किस तरह का शूट करना है। इनका भी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू आर डूइंग ब्राइडल शूट्स it comes out very good, or I have actually done some shoots on this kapda as well. This is actually a kapda, it's not paper like this one, but I personally love shooting on these paper because आपको बहुत एक decent, बहुत simple सा look मिलता है, बहुत अच्छा effect, soft effect आता है pictures में। But if you are doing an outdoor shoot, तो उसके अंदर you can really play with the light and with the composition, और उसके लिए you can use like different kind of stuff, or you can use certain outdoor place जहाँ पे कपड़े वो बहुत अच्छे लगें, बहुत और ज़्यादा creative और ज़्यादा अच्छा शूट आए। I personally love those creative clothes rather than मतलब obviously आपको हर तरह के कपड़े शूट करने को मिलते हैं, but personally I love shooting those creative or those different clothes which you normally don't wear. If you are normally shooting Eastern wear, you not really play much with the clothes because they are very simple and they have to be that way. कभी कभी आपके clients की डिमांड होती है कि उसको इंडोर शूट चाहिए होता है, कभी they want you to choose कि आपको outdoor करना है या indoor करना है। They mainly want to sell the clothes. So if you are shooting for catalog, your clothes has to look nice. It is very important for a model to understand a photographer and a photographer to understand the model as well. Because when you are shooting with a model, आपको comfortable बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको ये ना हो कि मुझे मॉडल तंग करेगी या पोजिंग में मसला करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जितना कंफर्टेबल मॉडल आपके साथ होगी और आप मॉडल के साथ होगे, उतना अच्छा आप शूट निकाल सकते हो, उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क आप कर सकते हो उसके साथ। सो केमिस्ट्री बिटवीन फोटोग्राफर एंड द मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी नेसेसरी एक्चुअली फॉर फोटोग्राफर टू अंडरस्टैंड मेकअप, बिकॉज जब आप किसी थीम पे काम कर रहे होते हो तो यू शुड नो कि आप जिस थीम पे काम कर रहे हो उसके अंदर मेकअप चाहिए, और आप एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट को बता सको कि मुझे ये लुक चाहिए मॉडल पे। और मेकअप आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है शूट में, ताकि यानी इन द सेंस कि वो एक्चुअली उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सके जो कि एक फोटोग्राफर के दिमाग में है और वो जिस तरह का मेकअप चाहता है अपनी शूट पे। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोटोग्राफर के लिए मेकअप समझना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स
I really love the black and whites Rizwanul Haq does. I don't think पाकिस्तान में उससे अच्छे black and whites fashion shoots कोई और कर रहा है. I've seen his a couple of his outdoor black and white shoots and they were seriously amazing. I love them. और in fact जो उसके outdoor black and whites भी होते हैं, they are very nice. They are very the light, the makeup and the model expressions, everything goes with the shoot. So that's the best part about Rizwanul Haq. और उसके अलावा I really like Qabar Riaz's work. One of my favorite shoots of Qabar Riaz was the Shannon's campaign which he did, और बहुत ज़्यादा उसने dramatic light और I think the theme was a filmmaker's theme कि उसके अंदर जो models and they were shown as directors and actors and stuff like that. So that was a very interesting shoot. उसके अलावा I really like, since I personally like doing outdoor shoots, so I think Ayaz's work, Ayaz and his outdoor shoots are very nice. I think Karachi mein if someone is doing creative work and doing something with a Western touch in his work is Ayaz and his. That's about it. For the people who want to become photographer, make sure that you are passionate about photography. आपको बहुत ज़्यादा patience रहना पड़ता है. आपको कभी-कभी काम बिल्कुल भी नहीं मिलता और कभी-कभी काम मिल जाता है. So it depends on your luck as well. But make sure that whatever work you do, you should be proud of your work, whatever you do. That was a little about me. I hope you guys like it. I'll see you some other time. So till then, take care. Bye-bye.